Good morning, students of class 8. This is your English grammar book, and today we are going to start with part 1, section C, chapter 1, that is the noun. So this is your book. There were a lot of confusion regarding the book. So now all the confusions are over. This is the same books with which you have to study. So let us start with the chapter noun. So children, there are 8 parts of speech. Okay, there are 8 parts of speech. Noun is the first parts of speech. So a noun is a naming word used to name person, places, things, processes, animals, living beings, feelings, etc. are termed as nouns. So noun is a naming word. आप लोग शुरू से पढ़ते आए कि नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं. आइदर द नेम दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, पर्सन का नेम हो, प्लेसेस का नेम हो, थिंग्स का नेम हो, प्रोसेसेस जो होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ नाउन. हाइबरनेशन इज अ प्रोसेस, हाइबरनेशन इज ऑल्सो अ नाउन. एनिमल्स, living beings and feelings, these all are termed as nouns. So here is a paragraph given below, and the words which are highlighted in this paragraph are nouns. Mr. Chopra, neighbors, lady, days, quarrel, street, house, ball, chance, window pane. So many things are given here. Okay, so let us read the paragraph. Mr. Chopra, Mrs. Chopra, my next door neighbor, happens to be a very quarrelsome lady. Often she picks a quarrel with any of my other neighbors. Just a few days ago, I witnessed a noisy quarrel between her and another neighbor in the street by my house. It all started with a petty issue. A boy was playing with a ball, and by chance the ball got hit towards Mrs. Chopra's house and broke her window pane. Mrs. Chopra came out of her house fuming, and without showing any sign of mercy began to thrash the poor boy, who started crying at the top of his voice. Hearing these cries of the boy, his mother came running. The two furious women started to quarrel noisily. Very soon the husbands also pitched in. However, instead of adding fuel to the fire, they tried hard to pacify the woman. Thus, after some time, the quarrel thankfully came to an end. But the quarrelsome nature of Mrs. Chopra has further been established. So, here children, taking note of the highlighted words, you must have observed that they have one common feature. Each of them is a name assigned referring to something. A person, place, things, feeling or matter. जितने भी words यहाँ पे highlighted हैं, that is a noun, and that is the name of person, place, things, feeling or matter. Okay, so Mrs. Chopra is in this paragraph. Mrs. Chopra, neighbor, lady, boy, mother, women and husbands refer to persons, street and house to places, ball and window pane to things, voice, quarrel and cries to abstractions, fuel and fire to matter, days and end to time, top to label, and issue, chance, sign, mercy and nature to feeling or concept. Therefore, all the highlighted words are nouns. Now we have understood the concept of noun. Let us learn about the salient features and kinds of nouns. So kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns. पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है. Proper nouns, collective nouns, abstract nouns, common nouns and material nouns. So first one is proper noun. So what is a proper noun? Proper nouns are a category of words representing the names of particular persons,
places, things, and so on. So a noun which names a particular person, places, or things is a called proper noun. Example: persons, places, and things. In persons, Mahatma Gandhi's, Anil Ambani, Sachin Tendulkar, they all are nouns. Places, Poland, Assam, 24, Paraganas, etc. Things, Samsung's, flat, Apple, etc. So these all are nouns. In proper nouns, we also the names of towns, villages, historical places, rivers, ships, streets, mountains, months of the year, days of the week, festivals, books, newspaper. These all comes in proper noun. ये सब जो है हमारा proper noun में आता है. Next, second one is common noun. Words naming the category or kinds of persons, living beings, places, things, etc. are called common nouns. So here words that are naming categories or kinds of persons, living beings, places, things, etc. These all are known as common nouns. Persons, mother. When we talk about person, जब हम person की बात करते हैं तो mother, woman, lad, young man, etc. These all comes in persons. When we talk about places, libraries, schools, hospitals, temple, etc. comes in places. Things, mug, gun, flower, guava, etc. These all are things. All the things comes in noun. That all comes in common noun. Living beings, ant, lion, snake, dinosaur, जितने भी living things है वो सब common nouns में आते हैं. Professionals, engineer, doctor, teacher, nurses, shopkeepers, driver. These all comes in common noun. So children, keep in mind, a noun that gives a common name to person, places or things of the same kind is called a common noun. जो common name देते हैं person, places और things को of same kind, जो एक ही kind की हो, उसे हम लोग common noun कहते हैं. The word book, pen, river. Book. When we talk about book, we talk only about, we are talking about book, not about particular book. जब हम book की बात करते हैं तो ये common है. कौन सी book है? ये हमारा उपनिषद है, ये हमारा रामायण है, ये हमारा महाभारत का एपिक है, या फिर हमारा कुरान है, कुरान शरीफ है, क्या है ये? वी डोंट नो दिस ऑल थिंग्स. ओके, पर व्हेन वी टॉक अबाउट बुक दैट इज कॉमन नाउन. पर जब हम रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, भगवद गीता के बारे में बात करते हैं देन देट आर प्रॉपर नाउन्स. पेन, व्हेन वी टॉक अबाउट पेन इट इज कॉमन. रिवर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रिवर, गंगा, जमुना, सरस्वती, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रिवर, वी आर जस्ट टेलिंग रिवर. तो जब रिवर का नाम आएगा तो इट इज़ कॉमन. माउंटेन, माउंटेन में भी जब हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो ये कॉमन नाउन है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर माउंटेन, व्हेन वी टेक द नेम ऑफ द माउंटेन दैट इज कम्स इन द प्रॉपर नाउन. ट्रेन, व्हेन वी टॉक अबाउट जन शताब्दी देन दैट इज प्रॉपर नाउन. पर जब हम ट्रेन सिर्फ बोलते हैं तो ट्रेन आता है हमारा कॉमन नाउन में. ओके, सेम वे बर्ड, एनिमल, सिटी, ऑल आर कॉमन नाउन्स. सिटी जब हम बोल रहे हैं तो सिटी में हम सिर्फ सिटी का नाम ले रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सिटी, तो ये कॉमन नाउन्स में आता है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट कम टू कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्शंस और कंटीजेंट्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा आर टर्म्ड एज कलेक्टिव नाउन्स. एग्जाम्पल आर्मी. सो कलेक्शन, जहाँ पे भी कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ वन होल. ओके, जहाँ पे भी कलेक्शन होगा, ग्रुप में की बातें होंगी, दैट विल कम्स इन कलेक्टिव नाउन. दैट द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स विल बी टेकन टुगेदर एज अ होल. ओके, हियर आर्मी, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्मी, अ ट्रूप ऑफ आर्मी. ओके, आर्मी का कलेक्शन होता है. पीपल, पीपल एक पीपल की बात नहीं होती, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल है. ओके, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ, ये फ्लॉक हो गया, ये भी आपका कलेक्शन है. बंच, बंच ऑफ कीज, क्रीव, ज्यूरी, हर्ड, टीम, क्राउड. सो आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं. बंच, कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स को बंच कहते हैं. पैक, अ कलेक्शन ऑफ डॉग्स को पैक कहते हैं. फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और कार्स को फ्लीट कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो D1 is material noun.
These are the names assigned to various materials or substances which make up different things. Materials की जहाँ बातें होती हैं, that comes in material nouns. Examples: oil, sugar, wood, water, air, etc. These all comes in material nouns. Abstract noun, name assigned to emotions, feelings, qualities, processes, ideas, states, etc. which do not have concrete form. जिनका concrete form नहीं होता है, they are termed as abstract nouns. Generally, they can neither be seen nor can be shown. They can just be felt or understood. So, abstract noun और concrete noun में difference होता है. Abstract noun cannot be seen, they can just be felt. Okay, children? But concrete noun can be seen. उनका physical appearance होता है. Space में वो एक appearance है उनका, एक space में हमारा occupy किए हुए place, जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दे डोंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, दे आर इमोशंस. जब हम लव की बात करते हैं तो लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कांट शो लव, वी कैन शो बट वी कांट सी लव. फीलिंग्स में क्वालिटीज़ हो गया, क्वालिटीज़ है शी इज़ ब्यूटिफुल, प्रोसेसेस है हाइबरनेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस, वी कांट सी बट दैट इज़ अ प्रोसेस विच वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड और फील. Okay, sincerity, determination, denial, sweetness, surprise, effectiveness, etc. So these all comes in abstract noun. Okay, children, hope you would have understood. So today we will study till here only. In next video we will continue forward. Okay, numbers of nouns we will study in next video. So till then, read this chapter and page number 97, page number 97 and page number 97, that is your homework. Okay, complete this homework and in next video we will discuss these answers. Okay, children, then till then stay at home and be safe. Thank you.